हेलो। तो चलिए इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन प्रियम्बल के देखते हैं विच इज फ्रॉम स्टेट पीएससी. Okay, so let's see some more question. This about myself. Okay, so you can see here which of the following describe India as a secular state. Okay, a fundamental right, preamble of the Constitution, 9th schedule, directive principle. Okay, वैसी बात है जो हमारा सेकुलर स्टेट ये बोलता है, दिस इज गिवन इन द preamble of Constitution. Okay, so answer is B. Next, which one of the following words was not included in the preamble of the Constitution in 1975? Okay, fraternity, sovereignty, equality, integrity. अब 75 से पहले नहीं था. ओके, 2070 उसके बाद 1975 के बाद हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था विच वाज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. सर हमारा डी हो जाएगा. इंटीग्रिटी हमारा 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें ऐड किया गया था. नॉट ओनली दिस बट सोशलिस्ट एंड सेकुलर एज वेल. ओके, सो एज फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी डी. अगेन देखिए इसमें हम क्या बताना, करेक्ट बताना है. So the objective resolution of Jawaharlal Nehru finally become preamble. It is not justiciable, it cannot be amended. Preamble cannot be override a specific provision of the Constitution. Okay, अब कौन कौन से करेक्ट है वो हमें बताना है. अब इसमें देखिए जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये तो गलत है. तीसरा गलत है, तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. बाकी ये भी फोर्थ भी सही है, नॉन जस्टिसेबल भी सही है और ये भी सही है. आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा. ठीक है, सो यस. जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, एक्चुअली जो हमारा प्रियम्बल बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारा फर्स्ट सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वहां पे उन्होंने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसी को प्रियम्बल का फॉर्म दिया गया था. ओके, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इस चीज को. ओके, आई विल रीड. द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 30 December 1946 वाज unanimously adopted by Constituent Assembly on 22nd January 1947. Later, this resolution became the fundamental foundation of preamble. The Supreme Court said in Kesavanand Bharati case that the preamble of the Constitution cannot be used to explain the ambiguous areas of Constitution. Amendment of preamble is possible, and by the 42nd Amendment, Constitution Amendment, the words socialist, secular, and integrity were added to it. It is non-justiciable, that is, its provision cannot be enforced in court of law. It cannot be override provision of the Constitution. Thus, okay, मतलब जस्टिस नॉन जस्टिसेबल मतलब जैसे फंडामेंटल राइट होती है वो वायलेट होता है तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. बट प्रियम्बल के केस में ऐसा नहीं है. अगर उसमें कोई चीज आपको लगता है कि नो ये यहाँ से मेरा कुछ नुकसान हो रहा है या मेरा कुछ, या मतलब उसमें इट इज नॉट जस्टिसेबल, आपको ऐसा लगता है कि नो ये गड़बड़ हुआ है, यू कैन नॉट गो फॉर जस्टिसेबल. द मीनिंग इज दैट. ठीक है, it has not status as similar as fundamental right, you can say like that. Next, the preamble of the Constitution was amended 17th, no 24th, 42nd, 44th. So it is 42nd. Okay, अब ये कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2 वीडियो ना, सो आई थिंक आपको एकदम से याद हो गया होगा ये चीज. ठीक है, इसके बाद अगर ये क्वेश्चन कभी आता है तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा. नेक्स्ट, द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट, 44th, 52nd, none of these. It is actually 42nd, A option, that we have seen many times in the previous questions.
Next, again same question, MPPCS में आया हुआ है. The term socialist was brought into the preamble of Indian Constitution by which amendment? 32nd, 42nd, 44th, 74th. So it is actually 42nd. Okay. Next, in the preamble, सेम वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बट वो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, सो वी हैव टू डू दैट. In the preamble of the Constitution adopted on 26 November 1949, which of the words were present? Socialist, secular, integrity, republic. Okay, हमें करेक्ट बताना है इसमें. तो आपको पता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इसमें ऐड हुई थी, सो रिपब्लिक तो पहले से था. ओके, सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार हम लोग करेंगे. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड in the preamble to the Constitution by 41st Amendment Act, 42nd Amendment Act, 43rd, 44th. अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो हमें ये इजी लग रहा है, बट एग्जाम में अगर आप ढेर सारे जब क्वेश्चन एक साथ में देखते हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, 44 था, मतलब 41st था, 42nd था, 43rd था, 44th था, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है. सो वैसा कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हमें we have to do a lot of questions. So the answer is B here, 42nd Amendment Act. Next question, the word secular was inserted in the preamble by, okay, ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है. 25th, 42nd, 44th, 52nd. So obviously it is 42nd. अब देखिए यूपीपीसीएस में 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग ईयर्स में. Last question for today's video. The goal of the Constitution is to assure all its citizens justice, social and economic liberty of thought and expression, equality of opportunity, dignity of individual. अब देखिए फिर से यही इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रियम्बल कंप्लीटली पता होना चाहिए. तो ये पूरी सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे प्रियम्बल में दिए हुए हैं. ओके, सो इसका आंसर डी हो जाएगा. ओके, सो यस, अब मुझे नहीं लगता कि इसको बोलने की जरूरत है. यू कैन जस्ट रीड द प्रियम्बल वंस, यू विल गेट दीज स्टेटमेंट्स. ओके.